Dear students, welcome in the world of operation research. That is the subject which is applied in each and everywhere, every sphere of life. So, operation research, what is operation research? What are the features of operation research? And objectives of operation research? Why we want to study operation research? All these the things we can discuss in the operation research. So, let's start exploring the word operation research. So this video we are going to cover what is operation research, from where the OR is originated, what are the phases of operation research and objectives of operation research, then thereafter features of OR, process of OR, importance of operation research, limitation of operation research and major areas of application of OR. So these topics we have to cover in this video. Let's start. So now, what is operation research? You already know operation research is a mixture of two words, operation and research, which means you have to find out those ways through which you can make a better decision making and helpful for management to perform better in the situation when it's difficult to take the decision. Then operation research is a new concept, but operation research is concerned with tools and techniques or the steps related with management decision making. Operation research clearly make things clear. It does not show you what is the right decision or wrong decision. It only shows how to make best among the available alternatives. So ये आपको मैनेजमेंट में एक बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए टूल प्रोवाइड करती है। आप ऑपरेशन सर्च की मदद से एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी मैनेजमेंट के लिए साउंड बेस क्रिएट करेगी फॉर डिसीजन मेकिंग। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड we are going to discuss what definitions of operation research. So, according to T.L. Seti, what he says, operation search is the art of giving bad answers to the problem which otherwise have worse answers. So, ये जो बुरा हो रहा है उसको ज़्यादा बुरा होने से रोकती है. Then, in the word of H.M. Wagner, what he says, it is a scientific approach to problem solving for executive management. आप एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में इस चीज को स्टडी कर सकते हो. Then after that, now we are going to discuss from where the operation research word is originated. You already aware in the history of world, two war is there. First World War and Second World War. So in Second World War, military uh, military perform the things, or they are making some operations regarding so that their casualty will be less, but enemy they can destroy enemy bases at high level. So British and American military strategists jointly work in the World War to apply scientific approaches where they can attack the enemy, and from where they can having the edge over the war so they can win the war. So term operation search was originally used in Britain during World War II to in a scientific way. 1941, the term explained in economic research. Then later on, OR come into the field of business, management, psychology, and all the sphere of life, or become part and parcel of life. Then, what are the phases of OR? So, three phases of OR is there: judgment phase, research phase, and next one is action phase. So, let's discuss first judgment phase. Under this phase, whenever you have to apply operation research, you have to determine what type of operation you want to perform, for what purpose you are taking the operation research,
how you can measure the effectiveness of particular tools or technique. And next thing is you have to understand what is the problem, from where it is to be originated, and what are the causes for that particular problem. So पहले जजमेंट फेज में आप प्रॉब्लम को सही तरीके से असेस करोगे, उसको डिफाइन करोगे, उसके ओरिजिन को देखोगे और उसके कॉजेस को ढूंढोगे। देन दूसरा फेज आपके पास आ जाता है, वो है रिसर्च फेज। अब और रिसर्च फेज में क्या है, इसमें आप डाटा कलेक्ट करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि आपको कौन सा डाटा प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज से चाहिए। फिर उसके बाद आप हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे। हाइपोथेसिस आपकी हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसके बेस पर आप जज करते हो कि जो आपकी फाइंडिंग्स हैं क्या वो करेक्ट होंगी या नहीं होंगी। देन उसके बाद आप एनालिसिस करोगे। एनालिसिस के बाद आप जो आपके पास फाइंडिंग्स आ रही हैं उनको आप जर्नलाइज करके लोगों तक पहुंचाओगे कि हाँ हमने ये रिसर्च की है और इसके बाद ये चीजें हमारे पास निकल के आ रही हैं। देन नेक्स्ट वन इज एक्शन फेज। सो एक्शन फेज में क्या है, जो आपने प्रॉपर चीजों को एनालाइज किया, उसको फाइंडिंग्स को जर्नलाइज किया, फिर आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे, रिप्रेजेंट शुरू करोगे करना उनको। सो in a nutshell, we can say that OR in many cases it's a full subject, but OR is not working in isolation. It is a multidisciplinary approach where your judgment, your subjective decision making is also play a crucial role in taking a better decision making. Then what are the objectives of OR? This is the answer to your question, why we study operation research. Why it is so important? Because in every sphere of study, whether you are in UG level or PG level, you have to study operation research. First point, objective in objective, identify optimum solution. It help in identifying the optimum solutions whatsoever you want to perform the objectivity of analysis। आप मान लो एक आर्मी है, वो लड़ाई करने जा रही है, तो सोल्जर को पता होना चाहिए कि जो वो फाइट कर रहे हैं उस फाइट करने के पीछे रीजन क्या है। ये इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, आपकी आउटपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए, वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए ज्यादा हेल्पफुल होती है। ऑपरेशन सर्च में या तो आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे या वो मेथड ढूंढोगे जिसके द्वारा आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर सको। इट्स इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इंटीग्रेटिंग द सिस्टम, ये सिस्टम को इंटीग्रेट करने में हेल्प करती है। जो अब नेक्स्ट पार्ट है जो इसमें जिसमें हम डिस्कस करेंगे, फीचर्स ऑफ ओआर, इसकी इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशन ऑफ ओआर एंड वेयर द ऑपरेशन सर्च इज हैविंग द एप्लीकेशन और scope of OR, that we can discuss in the next part of the video. Till then, thank you.